स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कमेटी में मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर विजय मखीजा, डॉक्टर सुजीत कुलकर्णी और डॉक्टर जितेंद्र वर्मा थे। इन तीनों लोगों ने मिलके आज का जो थीम है आप लोगों ने देखा होगा, सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफिकल्ट टाइम, उस पे काम किया और इसको एड्रेस करने के लिए अपने देश के कुछ चुनिंदा जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, उनको आज इनवाइट किया, जिससे वो लोग अपना एक्सपर्टाइज यहाँ पे प्रस्तुत करें और उससे इंडस्ट्री को, हमारे सेक्टर को, हम सब लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। अगर आप गूगल करेंगे सर्वाइव एंड थ्राइव तो उसका हिंदी में मतलब आता है जीवित रहें और फले फूलें। ये बड़ा मतलब समझिए कि एक विडंबना है एक तरह से कहें, और एट द सेम टाइम ये हमारी इंडस्ट्री का एक ज्वलंत उदाहरण है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री सेक्टर हमारा इतनी सारी समस्याओं और परेशानियों के बाद भी जो रेजिलियंस है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो एक अलग लेवल पे है और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। आज हमारी इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो मेन समस्या है, जिससे हम सब लोग काफ़ी सफ़र किए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसको एड्रेस करने के लिए आज हम 3 मेजर टॉपिक डिसाइड किए हैं, जिस पे हमारे वक्ता आके अपना राय रखेंगे, आपको इनलाइटन करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो है अनुशासित पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, कि डिसिप्लिन कैसे लाया जाए। दूसरा एक बड़ा चैलेंज रहा है हमारे इंडस्ट्री में, जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेके था। आज हम पोल्ट्री, एग या चिकन प्रोड्यूस करते हैं, उसका मूल्य निर्धारण कोई और करता है, जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। बाद में कुछ सारे चैलेंजेस आते हैं जो सीजनल हैं, फेस्टिवल्स हैं, कुछ अनवांटेड चैलेंजेस आते हैं, जैसे कल हमारे संधू साहब ने बताया कि एक चैलेंज ये है कि दुकानें बंद हो जा रही हैं 5-5 दिन के लिए के, तो कुछ पॉलिसी से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। हमारे ख्याल से इन सभी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए काफ़ी विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। अगले 1 घंटे के अंदर पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ आ रहे हैं और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि उनको हम अपनी समस्याओं को बताएं और उनसे उसका हल भी निकालें। आज 4 स्पीकर इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं लंच के पहले तक का आपको एजेंडा बताता हूँ और हमारे साथ डॉक्टर सुजीत लंच के पहले इसको मॉडरेट करने की कोशिश करेंगे और 3 स्पीकर सब्जेक्ट पे बात करेंगे। चौथे स्पीकर हमारी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखेंगे। उसमें 1-2 और रिक्वेस्ट आई हैं हमारे पास, जैसे शेख साहब ने बताया कि ही आल्सो वांट्स टू डू सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूपी पोल्ट्री इंडस्ट्री टू ऑनरेबल मिनिस्टर, तो उसको भी हम लोग देखते हैं और फिर शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। और इसको शुरू करने के लिए मैं अपने सहयोगी डॉक्टर सुजीत को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। एंड लेट मी स्टार्ट दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बड़ी सटीक तरीके से और संक्षिप्त में नीरज जी ने इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत की है और मेरा यह सौभाग्य समझता हूं कि मैं एक इंडस्ट्री के बड़े स्टालवर्ट के इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ आया हूं, उनको इंट्रोडक्शन करने के लिए। जब हमने ये थीम रखी तो चिकन कंजम्पशन और प्रमोशन, ये एक थोड़ा सा हमने एक सोचा टीम में नीरज जी के लीडरशिप के अंडर। तब हमारे सामने 1-2 नाम आए कि जिन्होंने काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री में चिकन कंजम्पशन, प्रमोशन, कैंपेनिंग सब जगह पे काम कर रहे हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं डॉक्टर तिजारे सर, जिन्होंने MUSC पोल्ट्री न्यूट्रिशन किया 1985 में और तब से आज तक वो वेंकीज़ में है। 40 इयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना इतना इजी नहीं है। हालांकि सबसे पहले तालियां एक बार इस डेडिकेशन के लिए चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री की नींव रखी है, उस नींव के कुछ पिलर्स है, उसमें से एक डॉक्टर तिजारे साहब है, नो डाउट सभी काफ़ी लोग उनको जानते हैं। उसके बाद कंटिन्यूज उन्होंने पहले एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, टेक्निकल मैनेजर,
फिर जीएम न्यूट्रिशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर ब्रीडर मैनेजमेंट, और अभी लास्ट कुछ ऑलमोस्ट 8 से 10 साल से तिजारे साहब चिकन प्रोसेसिंग के जो प्लांट है वेंकीज एक्सप्रेस जो आप सब जानते हैं उसके जीएम हैं। आज ऑलमोस्ट एवरी मंथ करीब 35 से 40 लाख मुर्गियों का प्रोसेसिंग होता है वेंकीज का। उसका पूरा मैनेजमेंट तिजारे साहब देखते हैं। जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट है प्रोसेसिंग के लिए वो भी तिजारे साहब देखते हैं, और उनको मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी के लिए वो नॉमिनेटेड है ऑलरेडी। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने भी उनको रिकॉग्नाइज किया है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड वेलकम Dr. Tizare sir to speak on strategies to promote consumption of chicken and eggs. Yes, sir. Good morning, everyone. First of all, let me thank to the organizers of PFI, President sir, Chairman, Vice Chairman, all the organizing committee of PFI to invite me and allow me to speak and share my thoughts to all the audience. I'm thankful to the senior government officials who are also there, the academicians, and my dear poultry farmers and friends. Now, you all people are very much expertise into poultry farming, eggs and chicken both. So once these production is concerned, then the ultimate aim is to sell and market these produce. So let me start a subject with, can you start with the first slide, please? I don't have. Yeah. Sure. Okay. So is it audible to everyone? Or should be more closer? Okay, thanks. So my topic is given to me as innovative strategies to boost the market and consumption of chicken and eggs. So the first, when we start a strategy to putting up a strategy on a level, we have to understand where exactly we are into the situation. So we expect our broiler population to be around 550 crores in this year, and our per capita consumption, broiler meat consumption is around 5.9 kilos. Of course, I calculated this based on average body weight of a bird as 2.2 kilo, with a standard mortality of live birds 5%, the eviscerated yield to 75% based on that. But in today's situation, at various markets, this body weight is on a higher side. So based on a weight of a bird, this consumption also might be varied. The another layer population in India is 34 crores, and we have a per capita of a consumption to around 103 eggs. So of course, these 103 eggs partly is also contributed by the desi chicken or a local chicken. This is, when we talk of a broiler population, let us understand what is the population of human population in India. Now, in 2025, till yesterday,
we were 146 crores population in India, and our growth rate is now 0.9% over last 1 year. This graph denotes that we are on an increasing phase for the population, and our population would be stabilized to around 2060, and we will be achieving a population of 170 crores, and further on till 2085, our population would be constant. If this is the situation, that means there is a continuous growth of a population, and the challenge would be how to feed this human population with a nutritionally balanced protein and a food, and there lies the subject. So if we consider that we had to feed 170 crores of a population with a nutritionally balanced feed, then the important factor of this food will be protein, and the protein would be the simple calculation. Of course, this is a standard formulation which everybody is aware of, but whatever is a height in centimeters minus 100 should be the ideal weight of a human being, and exactly that much grams would be the requirement of protein on a daily basis for the human being. Of course, there are certain exceptions in that, and those exceptions are at a growing stage, the requirement of protein would be on a higher side, and for the lactating mothers, pregnant women, this protein requirement also would be on a higher side. I gave you the standard, of course, but there will be some variation on these aspects. When we want to feed this protein to the society, it is our responsibility, and the poultry farmers would be sharing a large responsibility into that, and that responsibility will be providing a protein source, rich protein source from eggs and from chicken, and this is possible. The reason is 81% of the human population in India are non-vegetarian. Various surveys says around 60% of the people are consuming meat, and 81% of the people would be eating eggs on a daily basis. And there are, when we say that Indians are non-vegetarian, we always keep it in mind, India is a country with a feast and fast. Sometimes we have a feast, sometimes we have a fast. And considering that 7% of the people are consuming animal protein or chicken or eggs on a daily basis, 44% of the people are consuming products on a weekly basis. Now it is our responsibility how we can feed the society very effectively, and presently the availability is not at all a question. So these are the certain nutritional values which I compared egg with milk. Everybody is aware of that. Protein, egg is a rich source of a protein, and it should be fed. Only thing is, when we are feeding a protein, we associated protein always with the sports. We associated protein with the growth of a human being. We associated protein with the development of physical strength and also the neurological strength. But it is also our responsibility that the importance of egg has to be communicated to the medicos of India, and we have to be more frequently coordinating with them for the importance of egg, because egg is also important with white of an egg, yellow of an egg, but so many medicos advise that white of an egg is okay, but you should avoid or restrict consumption of a yolk. So we had to interact with Indian Medical Association and everyone to share the importance of eggs. We associated, any city started in a campaign for promotion of eggs since long, and the focus was protein association with the sports, and this was discontinued, and it was very well appreciated. We also have, can you play clipping at that level? आप उस पर टैप कीजिए.
वो फोटो पे क्लिक कीजिए। This is a new advertisement released by NECC on the promotion of egg. If we can play the sound. बेबो का एक ही रूल, रोज खाओ अंडे विदाउट भूल। Cause eggs are cool, cool, cool. Yes, eggs are cool, cool, cool. Summer में एनर्जी हो जाती है कम, खाओ अंडे एनर्जेटिक रहो हरदम। Strength और पावर मिले हर रोज with proteins and minerals का daily dose। Eggs are cool, cool, cool. Yes, eggs are cool, cool, cool. Yes, eggs are cool, cool, cool. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। Thank you. So, recently started acting also promoting an egg with various TV media and YouTube media and other activities. But when yeah. So another thing is very important thing for the eggs is also when we talk to lot many Indian Medical Association people, the doctors there, and they advise one of the meals with egg for the for the patients suffering with the diabetes and for the control of diabetes rather. And this is very important factor that we had to also look into the medicos for their consent on for the diabetes control or metabolic disorders control. Now there are concerns when we are marketing these eggs in a neat, clean way. Lot many new upcoming trend for the marketing has already been set. There are so many, there are certain few examples are with us. So the people are now, poultry farmers are enriching eggs with 3-omega fatty acids, supplemented with selenium, and also looking for the darker yolk pigmentation. So these are the new trends which are setting up. NECC is also promoting on certain egg cards, which promotes the sales of eggs and also for some chicken products at various places. And now the initiative has been started in Andhra Pradesh and other places. I know many people and of our poultry farmers are also starting a value addition on the chicken, on eggs, and they started producing hard-boiled eggs. Then they are attempting on a scrambled egg, producing egg burji and egg omelette in a frozen form or a chilled form and market it as those branded products. Now, after the eggs, when we talk on the eggs, that these are the primary things by which we can look for the promotion of eggs. And I'm sure if we convince to the medicos and continuously hammer on these things to the bloggers, the media reporters, our consumption from 103 eggs will definitely be doubled and will be little less than the developed countries on the egg consumption pattern. Now, meat consumption, if we look for, more than half of Indian chicken population, half of the Indian people are consuming chicken meat as a broilers. And some part is shared by buffalo meat, sheep and lamb and goat, all that. Around 50% of the chicken meat consumption is shared by the goat and sheep. Now, here the most important thing is, this is only organized sector possibly that
the chicken is grown with a complete integration in an organized way, and people are aware how they are grown. When I'm talking of chicken, I just also wanted to highlight that when we are promoting for the consumption of chicken, one major hurdle is misconception or misbelief about chicken and eggs at both the level. Some people talk of plastic egg, some people talk of chicken which is fed with a heavy antibiotics or hormone, and that's really destroying. So we had to really come out in a proper way. The reason is now FSSS AI, Government of India has put forward all the standard chicken meat and poultry meat where these are not at all concerned. And antibiotic is, as per the advice of FSSI, has not to be given, or if it's to be given, we have to follow certain withdrawal period to limit the levels of antibiotics in chicken and meat both. So the more than half of meat consumption is chicken. And when we talk of live chicken, whatever 550 crores of broilers which are produced in India, 90% of those birds are sold as a live birds. Only 10% of the birds are processed in a very well automized processing plants, semi-automized processing plants, or small processing facilities. These facilities are recorded as 88 to 90 processing plants that they are available in India with a capacity for production of 1.8 lakh birds per hour. And with this 1.8 lakh birds per hour, with the extended capacity, the production would be about 18 lakhs birds slaughtered on a daily basis. So, and one important thing is, all the promotion activities for the chicken are only made by these 10% of processed food producers. But the efforts also has to be given on marketing of a live chicken at various levels and various states. So I compared one nutritional standard for the chicken with broiler meat, with skinless and with skin, compared with muscle, mutton muscle and fish. The high amount of protein contained in a broiler meat with skin, with and without skin, compared with mutton and fish. Of course, in fish, there are various types of fish. I considered here katla, but there can be fish with a high protein also. Now we know the strength of a chicken, which is protein rich, balanced in amino acid, which is very much affordable. We have a traceability to the production up to the breeder level or even to more. And it is convenience for the cooking, and it is available all over India. Actually, when a consumer, as a consumer, when he goes to the market, he is looking for a clean and healthy environment, and he is also looking for a shopping experience to buy a chicken. And that shopping experience, he wants neat and clean chicken, the quality product. Quality product is very simple. Now I referred to you for the FSSS AI standards. FSSS AI standard had laid down certain standards for the quality of a chicken. It is for antibiotic residues. It is for the microbiological content on the chicken after the slaughtering. It is for the heavy metals. All those standards has to be followed. But I am sure when everybody, all the poultry farmers are giving a very much balanced ration to the poultry farm, to the birds. So these concerns are, though definitely important, we are well within these limits, particularly for the heavy metals. And for microbiological standards, we had to ensure that all the chicken which is processed or slaughtered has to be most hygienic way in a systematic way. Then only this would be there. One major concern for sales of a live chicken is body weights and age. What is preferred body weight of a bird
across India is for the birds with a live weight between 1.8 to 2 kilo is the most preferred body weight when somebody is eating a chicken with bones. Whereas the preferred body weight for the deboned meat, for the breast fillet or a leg fillet, across everywhere is about 2.2 kilos. So my suggestion that the birds should be grown to this body weight only. Most of the quick service restaurant chains, let it be KFC or McDonald's or Popeyes or Domino's or so many other for the example, all these chains prefer the body weight of this range for their products to be offered to the consumers. Of course, we have a seasonal demand as I explained to you. India is a country with feast and fast. So sometimes our birds are sold in a time, sometimes they are not sold in a time. So there can be accumulation of these birds in the market or with the poultry farmers. The only solution to that, of course, lot many poultry breeding state organizations are promoting these concepts for the promotion of eggs with variety of dishes and all those communication through WhatsApp and through other media. This is nice, these efforts are good, but it should be also be available to the public other than the poultry industry. That is very important. So another thing is we say that 90% of the chicken is sold as live. Only 10% of the chicken which is sold is processed. And all the processing companies follow these important steps. So that includes hanging, stunning, bleeding, scalding, defeathering, evisceration, chilling and resting. Why these are important? These are important for the reason that we want to convert a muscle of a chicken to meat. In my opinion, we have forgotten this concept that we are converting a muscle of a chicken to meat. And what is required there is a normal pH of a meat of a live chicken has to be reduced between 5.9 to 6.1, and that is a process. That process includes a formation of rigor mortis. So I'll try to conclude with very limited technical words on that. Rigor mortis, where the secretion of lactic acid is there, that protects the color of a chicken, that protects the texture of a meat, it allows the muscular contraction in a time, it forms the tenderness of a chicken, and it also increases water holding capacity of a chicken, by which the meat is tender, succulent and juicy for the final consumer if he purchases. And there is a definite process into that. We have forgotten that process. Can I play a clipping? ये primary processing पे clip कीजिए. This is a small clipping. I think most of the people must have visited to chicken processing plants are aware. Those who are not aware, I will take few seconds from them. No, not this. There is with a live birds दिखते उसमें. Primary processing. So in this primary processing, the birds are hang upside down. They are giving with a पिछले साइड पे जाइए. Previous.
So the birds are hanged upside down. Once the birds are hanged upside down on the shackle, they are given a mild shot to increase the blood pressure, and also in that 1 minute of attack, the birds are bleeded for about 1.5 minutes to ensure 100% bleeding of a bird. Once the birds are bleeded, they are scalded, they are given a lukewarm water wash, and then the bird feathers are removed. After removal of feathers, automatically or manual, you can remove the viscera, and this viscera, once it is removed, the chicken is put into a chiller for almost 50 minutes to bring the temperature of a bird between 0 to 4 degrees centigrade. And this is a stage where entire rigor mortis after that happens, and the meat is reduced in the pH. The meat is then, the muscle becomes meat and is fit for consumption. I think this is very important factor for the processing. Next. There are certain clippings, but I'm just, I'll avoid those. So chilled chicken, when it is sold in the retail market, you know the present market rate and what price it is sold at. This is a photograph from Delhi at Green Chick Chop, and a leading seller. His prices are very high, boneless, quite good, and the consumers can pay this. This is very interesting. He is selling a good quantity of chicken also. So we also have further process production. There are almost 9 to 10 international quick service restaurant chains and more than 50 restaurant chains, Indian restaurant chains who are there operating in India. All these quick service restaurant chains are operating, and as I told you, they preferred what products. So this is further processed products is a new sector by which the consumption would be increased, and we expect it to increase. Of course, 10 minutes, no? I was, okay, 5 minutes. So we have a lot many, to advertise this chicken, we have lot many viewerships for, we have television which is highest viewership of 61%, and then followed by Google, and all these media are there for the viewership. We should utilize this viewership for the advertisements of chicken and eggs. Of course, there are a lot many emerging e-commerce platforms which have started. These e-commerce platform started very aggressively post-COVID, where during the COVID, it taught us a lesson that we have to keep health and hygiene and a proper food, hygienic food only to be consumed. So these e-commerce platforms are delivering the processed food in time to them, and this is very well appreciated. Another factor which I feel is important, we have an efficiency into production of a chicken, but we are geographically placed in such a way that we can tap to the east and the west market both. And there are certain examples which I feel. There is a Thailand chicken meat export market. If you see this graph very cautiously, they were exporting a chilled chicken meat which is faint blue, and their sales was increasing up to 2003, but suddenly there was a drop due to bird flu onset in Thailand, and then they transferred a complete industry from a chilled chicken meat to processed meat industry, and this is how their sales lies. Now they are selling more of a processed food products than the chilled chicken. Of course, there are constraints in selling the processed food products because of the bird flu scenario. If it is declared in one part of the corner of India, it is affecting to other parts of chicken. Now we have to be a talk of town for the promotion of eggs. Tomorrow is World Egg Day. Nagpur Veterinary College in Nagpur has organized organizing a world record. They will be cooking 5,000 eggs, anda burji,
to make a world record with the help of Mahachef Vishnu Manohar at Nagpur. Such activities to be promoted. There are certain activities which Venki's has promoted, saying khane mein kya hai. There are varieties of chicken and eggs and dishes which are being prepared. So I think you people are very much aware of the YouTube. Some of the people must have seen also. And in addition, we should have egg and chicken festival organized on a regular basis. I know wherever there was a dip in the prices of eggs or chicken, particularly in the incidents when the bird flu was first declared in India, many film actors along with the poultry farmers traveled into the various areas, organized the food festival or chicken mela, and the prices shot up after that. So what is the more importance is, we have to create an awareness to the people, hammer them on a regular basis that this is available, most hygienic protein at an economic cost is available to you. For that, we can organize certain chicken competition. We should always have a talk of town with the help of food bloggers on the newspaper, media, everywhere. And of course, midday meal scheme is being implemented in various parts of India. They are giving a free eggs to the school going children, value addition and the export of chicken. Thank you very much for the patient listening. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच सर. आई थिंक एनईसीसी को एक क्रेडिट तो जाना चाहिए कि कॉमन मैन, आम आदमी के पास जो अंडा गया, चिकन गया, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट एनईसीसी है. मैं भी जब मेरे सोसाइटी में व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डालता हूँ तो उनको एनईसीसी की ऐड याद आती है. और डेफिनेटली सर ने जो कहा कि 90% पेरिशेबल जो लाइव वेट मार्केट है, 10% प्रोसेसिंग है. हमारे पास आई थिंक सर 2 चैलेंज है. एक तो लाइव मार्केट का कंजम्पशन बढ़ाना, वो भी एक चैलेंज है, और वेट मार्केट जो प्रोसेसिंग है उसको भी बढ़ाना. आई थिंक दैट्स द 2 चैलेंजेस. बट डेफिनेटली इतने ब्रांड एम्बेसडर लेके जो करोड़ों लोगों के पास एनईसीसी पहुंचती है, वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली पीएफआई कोशिश करती है हमेशा एग्रेसिव, और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करे, ये रिक्वेस्ट है. और सर को, डॉक्टर तिजारे सर को सम्मानित करने के लिए मैं रिकी थापर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ट्रेजरर वो आए. मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सर के लिए, वेंकीस के लिए और एनईसीसी के लिए एक बार तालियां बजाएं प्लीज. अभी क्विक रिक्वेस्ट आई है कि प्रेजेंटेशन के लिए, तो सभी से रिक्वेस्ट है, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेल आईडी जो है हम ग्रुप पे भी कर देंगे, तो उस पर आप रिक्वेस्ट भेजिए मेल, तो आपको सॉफ्ट कॉपी सर के प्रेजेंटेशन की भेज देंगे. सर ने, तिजारे सर ने भी कंसेंट दिया है प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए, तो उसके लिए तिजारे सर का थैंक यू वेरी मच. मैं नेक्स्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और इन्वाइट भी करना चाहता हूँ. वन ऑफ द वेरी पॉपुलर फेस ऑफ आवर इंडस्ट्री, I can say one of the best person from the government representation who are so close to our industry. जितना गवर्नमेंट में वो एक्टिव है, हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री में भी एक्टिव है. डॉक्टर पी महेश, मैक्सिमम लोग, सब लोग उनको जानते हैं. वायरोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर पी महेश ने कंप्लीट करने के बाद वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बैंगलोर से उन्होंने मैनेजमेंट ग्रेजुएट कोर्स किया है.
प्रेजेंटली वो जॉइंट कमिश्नर है, डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री बेंगलोर ऑफिस में। काफ़ी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फोरम्स में इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक वेरियस पर्टिकुलरली पोल्ट्री फोरम पे वो बात करते हैं एज अ स्पीकर। वो एडवाइजर है, मेंबर ऑफ वेरियस वेटरनरी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली इंडिया में, ऑल ऑफ इंक्लूडिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। डॉक्टर पी महेश चीफ लाइजन ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो रिप्रेजेंट करते हैं खुद फॉर लोकसभा और राज्यसभा के एक्टिविटीज़ के लिए फ्रॉम बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और वो खुद पॉडकास्टर है, कोशिश करते हैं कि जैसे एनएसीसी कोशिश करती है आम आदमी के पास पहुंचने के लिए, तो अलॉन्ग विथ इंडस्ट्री तो वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनके जितने जो भी रीच आउट है उनका, कि वो अपने पॉडकास्ट करे। ऐसा नहीं कि हर बार अपनी इंडस्ट्री के लोग, अलग अलग अलाइड इंडस्ट्री के भी लोगों को बुला के वो इंटरव्यू लेते हैं। और सबसे जो मुझे उन्होंने सीवी में नहीं किया है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैशनेट पर्सन आई ऑल्सो एवर सीन। डॉक्टर पी महेश, प्लीज वेलकम एंड आई लाइक टू इन्वाइट यू फॉर द स्पीच on disciplined poultry farming. सबको नमस्कार। इतना सुंदर सिटी ऑफ लखनऊ, हिस्टोरिक सिटी, मैंने पहली बार आया था। yesterday when I landed, I got excited to know more about Lucknow. Respected I think तिजारे सर के पास इधर सर। नमस्कार सर, हमारा ग्रुप भी आ गया। संजय भूसरेड्डी सर, ओपी चौधरी सर, शुक्ला सर, रानडे सर एंड ऑल द टीम by PFI headed by बिट्टू डंडा जी। बिट्टू डंडा जी के बारे में भी बोलना पड़ेगा, बाद में बोलता हूँ in my course of maybe just about 25-30 minutes. Let me start asking questions. थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे आपको शुरू में। How many of you people did a research on Ramada? Ramada ब्रांड किधर का है? सोचा है कभी? हाथ ऊपर उठाइए, कोई सोचा है ब्रांड किधर का है? एक ने भी नहीं किया। देखिए, that is what happens. Ramada is an American brand, started in 1953, public listed company, doing only $1.5 billion turnover, $1.5 billion, but see the promotions. 800 hotels in 70 countries. This is what they think to create the brand in the world. Ramada Vindham is now a listed company in US and operating more focused to India. They know that Indian people do great weddings. Indian people want luxury. Indian people want color. Indian people want passion. But why can't we think about our sector also to become that sort of an awareness? So with this, my presentation, I have named it as P3 for poultry. Namaskar, sir. I want to welcome my both gurus here, Sanjay Bhusreddy, the chairman of RERA Uttar Pradesh, plus OP Chaudhary sir, former joint secretary, and our dean of Mathura College, plus vice chancellor of Gadwasu for this event, and Ricky Thapar, the most dynamic brand ambassador of poultry. Betty, please sit down. Please settle. So what I wanted to do is maybe take you a tour in another 15 minutes because we have to give the dayas. Vijay Sardana bhi aa gaya. Welcome Vijay ji. So I have made it as pragmatic poultry, that is P3. हिंदी में बोलना शुरू करूंगा। हम अभी संकट में है, संकट विमोचन कैसे करना है, हम स्ट्रक्चर कैसे होना है हमारा इंडस्ट्री में, ये थोड़ा देख लीजिए। पहले नंबर्स थोड़ा दूंगा सो दैट अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं भारत का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मतलब उत्कृष्ट केंद्र। हम लोग क्या हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे एंड थोड़ा हमारा सोया और कार्न का जो गेम प्लान चलता रहता है उसमें हम कैसे खेलना है। एंड मेरा एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं ये मंच से, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तब बनेगा शान हमारा सेक्टर का। वो मिलना है सुर, सुर हम मिलना है सुर। हम इतना एसोसिएशन है, मिले सुर हमारा बनाना पड़ेगा। लेट मी मूव ऑन। लंबी स्लाइड है,
मतलब उसका हार्ट बता दूंगा, चिंता मत करिए, पढ़ना नहीं, स्लाइड को पढ़ना नहीं, देखना नहीं। दूध में हमने ये हासिल करके दिखा दिया, जिस देश में गंगा बहती है वो भारत है। अभी हमने दिखा दिया जिस देश में दूध बह रहे वो भारत है। एक बार ताली बजाइए। वी आर नाउ नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर मिल्क, 4% ग्रोथ। सिमिलरली मीट वी आर ग्रोइंग अराउंड 5%, इन एग ऑलमोस्ट 4%, वो 33% रॉन्ग है। मतलब ये देख लीजिए ना, हम दूध में शुरुआत कैसे किया, आधा लीटर तक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पहुंच गया, आधा लीटर 471 ग्राम्स, वेरएज वर्ल्ड ओवर केवल 350 ग्राम्स अवेलेबल है, दूध नहीं है। हम लोग इसमें कैसे हासिल किया, वो हमारा पोल्ट्री में भी और अंडा में भी करना पड़ेगा। उसमें देखिए दूध का वर्ण चक्र, 45% of the milk is coming from buffaloes, 31% is coming from crossbreds, 21% is coming from indigenous. We are increasing the indigenous size बढ़ा रहे हैं। अंडे में देखिए मैजिक हो गया। क्या मैजिक? 87% is coming from improved foal. I call it as egg machine, अंडा का मशीन। छोटा 1.3 बॉडी वेट बर्ड को कितना खिला रहे हो आप? 100 ग्राम, 110 ग्राम। कितना दे रहे हैं मुर्गी? ऑलमोस्ट 50 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम तक अंडा दे रहे हैं। अभी इतना साउथ में इतना संचलन हो रहा है। मेरे पास एक आदमी है डॉक्टर, उन्हें बीवीएससी करके शुरू किया, बाद में जाके 8 लाख मुर्गी रख रहे हैं। उसका अभी पालन करना 100 वीक पालन करता है, 500 अंडा लेता है, 5 सेंचुरी अंडा लेने के लिए तैयार कर रहे हैं बर्ड को। वो मशीन, मैं बोलता हूं अंडा का मशीन बन गया इंडिया में। अभी देखिए मुर्गी पालन में सर ने भी दिखाया मीट सेक्टर में कैसे कर रहे हैं। 51% इज फ्रॉम चिकन। एंड उत्तर प्रदेश में हम बैठा है, ये हमको मीट पालन में रोशनी देता है। मालूम है $4 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा दुनिया में नंबर 1 है बफलो मीट। अलानास, अल कबीर हमके लिए कीर्ति लेके आ रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है। $4 बिलियन माने 36,000 करोड़। सिमिलरली गोट सेक्टर, शीप सेक्टर, रेवोल्यूशन हो रहा है साउथ में, नॉर्थ में। पिगरी का सेक्टर, पिगरी का इन्वेस्टमेंट मालूम है 4 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ का प्लांट लग रहा है पिगरी यूनिट इन बैंगलोर। एंड पीपल आर सेलिंग एंड एक्सपोर्टिंग। मेरे पास एक हैम शॉप है बेंगलुरु में, 3 करोड़ का टर्नओवर करता है, एक्सपोर्ट करता है, ओनली 1 शॉप। बट वी नीड टू रिमेंबर माई स्टेटमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, रमाडा सिटिंग इन अमेरिका कैन डू अ ब्रांड, व्हाई कांट यू डू इन इंडिया? अभी ये बड़ी सिंपल चीज बट बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज। ये देख लीजिए अभी हमारा सेक्टर कितना बड़ा है। ये सब हम बोलना जरूरत है, हर एक मंच में बोलना जरूरत है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर से आगे है, 20 लाख करोड़ का मालिक है आप लोग, 20 लाख करोड़ का मालिक एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। Value of milk is more than value of rice, wheat, sugar cane put together. ये बोलना जरूरी है। लगभग हमने 12 करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, 12 करोड़ लोग। मैं जब भी मेरा पैरा सेक्टर पोल्ट्री में आता हूं, P फॉर पैरा, P फॉर पैशन, P फॉर वॉट एवर यू कैन से पोल्ट्री, ये हमारा पैरा सेक्टर में कभी बोलता हूं TCS ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है, भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 कंपनी सॉफ्टवेयर का है। उनका जो टॉप लाइन है वो भी 3 लाख करोड़ है, मुर्गी का टॉप लाइन भी 3 लाख करोड़ है। जोर से थोड़ा क्लैप मारिए, हम TCS ऑफ लाइव स्टॉक। मगर क्या सर डिफरेंस है? डिफरेंस ये है TCS केवल 6 लाख को लिए एम्प्लॉयमेंट देता है, 6 लाख लोगों के लिए, बट हमारा सेक्टर 6 मिलियन, इंक्लूडिंग महेश जी, शुक्ला जी, अजय, एवरीबडी 6 मिलियन। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन? यू अंडरस्टैंड? इक्विटी किधर बढ़ा है देख लीजिए। दूसरी बात, शीप एंड गोट का भी कैचअप हो रहा है, 3 लाख करोड़ का सेक्टर है। फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स। अभी आता है बैलेंसिंग एक्ट। ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से फोटो भी ले लीजिए, चिंतन करिए क्या होता है, क्यों होता है। हम बोलता है हमारा ड्राइवर है, मुर्गी पालन का ड्राइवर है कार्न एंड सोया,
मक्का और सोया, उसका डिमांड और सप्लाई देख लीजिए कितना चेंज हो रहा है। अभी इतना लाके हमको लगभग 12 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉर्न इज गोइंग फॉर एथेनॉल। 12 मिलियन मेट्रिक टन्स, किधर बचेंगे हम? क्या करना पड़ेगा? सोया कम होते जा रहा है क्योंकि कॉर्न का प्रदेश ज्यादा होता जा रहा है। नया एंट्री आ गया डीडीजीएस। डीडीजीएस अभी 5 मिलियन मेट्रिक टन आप यूज कर रहे हैं, मतलब उससे भी बड़ा होने वाला है। उसमें भी बहुत चिंतन करना पड़ेगा। मतलब आपका बेसलाइन बनेगा ये डीओआरबी। एक्सपोर्ट ना बंद किया तो भारत सरकार डीओआरबी का भी प्राइस जाता था 20 रुपए तक। भारत सरकार आपके साथ है। डीओआरबी का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, अभी सितंबर तक ही है एक्सपोर्ट बंद। मतलब क्या है ना, दोनों हाथ में जगलिंग जैसा आपको करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? वो डेटा आपको चाहिए। यू शुड हैव द डेटा फॉर एवरीथिंग, प्राइमरली टू डिसाइड। डिसीजन लेने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। ये मेरा दोस्त अशोक कुमार का वर्ण चक्र है, हर एक साल रिलीज करता है। देखिए ये वर्ण चक्र में क्या बोलना चाहता हूं। हमारा मुर्गी पालन जो बिट्टू डंजाड़ जी टीम से लेके अजय से टीम से, कि जो भी 10 एसोसिएशन है, इससे जूझना पड़ता है। ये जूझना क्या है? जो काला दिख रहा है तब पैसा नहीं आएगा, जब हरा ग्रीन दिख रहा है तब पैसा आएगा। वो भी ग्रीन जोन कम होते जा रहा है, काला जोन ज्यादा होते जा रहा है। काला जोन्स फॉर मेनी रीजंस, ओवर प्रोडक्शन, श्रावण, पुटासी, एग्जाम्स, चिकन खाना बंद हो जाएगा। तो ये वर्ण चक्र में जीना कैसे करना है, वही है हमारा स्ट्रक्चर प्लानिंग। अभी सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए क्या करना है ये सोचिए पहले। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं जितना साल से बोल रहा हूं डयास में, 20 एसोसिएशन है, मगर सुर मिलाना पड़ेगा। अगर आपने सुर नहीं मिलाया, दूसरा गाना डाल दिया, एक ने जाज किया, एक ने रॉक किया, एक ने संगीत रहा, एक ने भरतनाट्यम किया, वो नहीं चलेगा। एक स्वर में आइए, मैं दिखाता हूं किस कंट्री ने एक स्वर में जाके किधर पहुंच गया। ओपननेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डरिए मत। जब भी हम गवर्नमेंट से आते हैं, रजिस्ट्रेशन करो भैया, आप लोग पीछे हट जाते हैं। वॉलंटरली आइए, जैसे कोविन ऐप में किया, जैसे यूपीए में किया, जैसे हमारा टोल टैक्स में किया, आरएफटीए में किया। व्हाई कांट यू बिकम ओपन? थोड़ा ओपन आइए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करिए। पीएफआई कैन टेक अ लीडरशिप। सर हम रजिस्टर करने के लिए तैयार है, पूरा फॉर्म्स ऐप में डाल देंगे, कितना मुर्गी है, कितना डिमांड है। आज हम लोग विश्व में नंबर 1 है डेटा मैनेजमेंट के लिए। ये क्यों नहीं कर सकते हम लोग? थोड़ा सोचिए। आज मेरा काम है आपको सोचने। केवल आप सरकार कब पहुंचते हैं आप लोग? जब आप डिफिकल्टी में रहता है। खुशी खुशी में कभी सरकार का याद ही नहीं करता है। भूसरेड्डी सर इधर है, 2004 से आप कभी नहीं आए था भूसरेड्डी सर के पास। जब भी रोना आता है पूरा इकट्ठा फ्लाइट बुक करके आ जाते हैं आप लोग। वो बंद करिए। अच्छी दिन में भी मिली है ना, अच्छा दिन में, अच्छी दिन में, आई डोंट नो, सरकार से मिलिए, सरकार आपके साथ है। कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं क्लफमा में भी बताया था, इतना शानदार फंक्शन करते हैं हम लोग, साल में 5-6 फंक्शन। ऐसा मत करिए। मैं सलाह देने वाला हूं, वीकली क्या करना है, जब भी ग्लट आता है उसके लिए क्या करना। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन चाहिए भैया। जैसे अभी हम पानी ऐसा पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? हम रेगुलेट कर रहे हैं हमारा हेल्थ। ऐसा आपका भी हेल्थ रेगुलेशन ऑफ द सेक्टर, मुर्गी पालन का सेक्टर हेल्थ रेगुलेट करने के लिए आपको तो प्रैग्मेटिज्म और स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये थोड़ा गौर से पढ़िए। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स टू रीड, देन उसका स्टोरी बताता हूं। जो कंट्री हमसे भी पीछे था, ये क्या करके दिखाया देखिए। वो जितना पैसा खर्चा करता है देखिए। ब्राजील का एसोसिएशन का नाम ही है ब्राजील एसोसिएशन फॉर एनिमल प्रोटीन। मैं सलाह दूंगा 20 इंस्टीट्यूशन चेंज करके एक नाम रखिए, उसमें प्रोटीन दिखना है। उन्होंने क्या कर दिया देखिए,
$10 to $20 million कैंपेन, भैया खर्च करना शुरू करो। मैं क्लफमा में भी बोला था, आपने इतना शानदार एसोसिएशन कर रहे हो सब में, बट वीकली कम से कम वीकली 10 लाख 20 लाख खर्चा करो, शुरू करो, नेशनल कैंपेन करो, हर एक वीक में पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में आना चाहिए ऑन प्रोटीन अवेयरनेस, मिशन फॉर लाइफ, मिशन फॉर प्रोटीन, ऐसा कुछ सोचो, एड एजेंसी रखो। उन्होंने एड एजेंसी रख के क्या ब्रांडिंग कर रहे देखिए, ब्राजीलियन चिकन, वो चाहे वेंकीस का हो, चाहे सुगुना का हो, चाहे बिट्टू डंडा का हो, चाहे अजय का हो, वो भारत का चिकन है। वो भारत का चिकन के लिए आप this hotel sitting in America, so how can you stamp Indian chicken? So देखिए ना, उतना 140 members have come together and exporting, कितना मालूम है, लिखिए 5.1 मिलियन यूज करता है, उतना ब्राजील एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए पूरा पैसा इकट्ठा करके एसोसिएशन ने प्रमोशन के लिए ब्राजीलियन चिकन, ब्राजीलियन चिकन, ब्राजीलियन चिकन स्टैम्प करके। अर्जेंटीना में क्या किया, वो भी हमारा जैसे, हम भी बोला संडे वो या मंडे रोज खाओ मंडे, मगर उन्होंने क्या कर दिया, उसको नेशनल कैंपेन बना दिया, प्रमोशन हर एक दिन कर रहे हैं, कैसे विवो पोर दिया, वो नेशनल कैंपेन है, जाके यूट्यूब में सर्च करिए है